हेलो फ्रेंड्स, इजी कुकिंग विथ रीना में आपका स्वागत है। ऐसी आसान रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हलवाई स्टाइल आलू गोभी का सब्जी के लिए ये सामग्री चाहिए। गोभी, आलू, धनिया पत्ता, अदरक, टमाटर, धनिया जीरा का पाउडर, मिर्च का पाउडर, किचन की हल्दी, हींग और हम लोग 5 फोरन देते हैं। और ये तेल, शुद्ध घी, गरम मसाला, मरीच का बुकनी और तेजपत्ता। तेल 4 चम्मच। डाल रहे हैं इसको पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद आलू पहले इसे लाल कलर को भूजेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। और इसी तेल में अब आलू डाल के इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। इस आलू को थोड़ा सा ढक दें। आलू को ढक देते हैं, थोड़ा 5 मिनट ढका हुआ रहने देंगे। उसके बाद ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे निकाल के तब इसमें और मसाला डालेंगे और बीच बीच में खोल के ढक्कन हटा के इसको चलाएंगे। देखेंगे जब ये दब रहा है तब इसको निकालेंगे। थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी ये पका नहीं है, थोड़ा और पकेगा, उसके बाद निकालेंगे। हाँ, आप देखिए ये हो चुका है। आलू गल भी गया है और अब इस आलू को हम निकाल लेते हैं। अब इसमें और 2 चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि ये हलवाई स्टाइल का है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल लगेगा। आप अपना कम भी तेल डाल सकते हैं। इस तरह रेसिपी बना के देखिएगा। देखिए
इसमें थोड़ा सा 5 फोरन, थोड़ा सा 5 फोरन, हींग, तेज पत्ता, something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. अब इसमें धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च, तीन चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालें, 1 चम्मच लाल मिर्च अपना स्वादानुसार डालिए, हल्दी पाउडर, क्योंकि मैं सब्जी में उधर हल्दी नहीं डाले इसलिए थोड़ा ज़्यादा हल्दी डाल। और ये किचन किंग देने के बाद सब्जी में और स्वाद आ जाता है। मरीच वाला मरीच का जो है वो डाल, काला मिर्च का इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी, देसी घी, अब ये जो गोभी है, आलू, गोभी, डाल के इसको थोड़ा मिला लेंगे। क्या सब्जी में ये मिल जाए मसाला। अब इसमें ग्रेवी डाल दें। अभी हम नमक इसमें डाले नहीं है, इसलिए अब नमक अपना स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। अब इस पत्ते का इसमें जरूरत नहीं। 2 मिनट के लिए इसको ढक के सब्जी पूरा अंदर ग्रेवी का 2 मिनट हो चुका है। अब इसका ढक्कन